மதத்தின் பெயரை சொல்லி பிழைப்பு நடத்தும் போலி கும்பலை தோலுரிக்கும் நிலை மறந்தவர். I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. இந்தியாவின் அரசியல் குறித்து வெளிநாடுகளில் ராகுல் காந்தி பேசுவது நாட்டு நலனுக்கு ஏற்றதல்ல என்று மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ராகுல் காந்தி எப்போதெல்லாம் வெளிநாடு செல்கிறாரோ அப்போதெல்லாம் இந்தியாவை விமர்சிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார். இந்தியாவிற்குள் அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுவதில் ஆட்சேபனை இல்லை. ஆனால் நாட்டுக்கு வெளியே இந்தியாவின் அரசியல் குறித்து பேசுவது நாட்டு நலனுக்கு ஏற்றதாக இருக்க முடியாது என கூறியுள்ளார். For some time now, there is this case of students who the Canadians say did not study in the college which they should have studied, and when they applied for a work permit, they got into difficulties. From the very start, we, meaning the foreign ministry here, as well as our High Commission and the consulates in Canada, have taken up their case. And our point is that, look, the students studied in good faith. You know, if there were people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. So the latest report that I got, in fact only this morning, was that I think yesterday the Canadian Prime Minister also kind of made a statement in the House of Commons there, and the minister also tweeted something, and they have also been talking to our High Commission out there. I think the Canadians also accept that, you know, it would be unfair. I mean, if a student has done no wrong, and you know, I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard. Regarding this float issue used, let me actually answer it, because I think there's a bigger issue involved. And the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously, and frankly to us, we are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat their history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. जो आपका जो सवाल था वो राहुल गांधी वाला, देखिए, उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है, और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिज़ल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिज़ल्ट तो वही होगा, हमें पता है, हाँ। पर अगर आप देखें, जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए, हमारे यहाँ जितने भी आप बीच में, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में नहीं।
और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी।